Hello everyone, this is your Bandhini Sharma. Welcome back to my channel BMB Tutorial. So in last session we have discussed about the rational numbers, okay? And in today's session we are going to discuss the exercise 9.1. Okay, so let's start it. So question number 1 is list 5 rational numbers between. Here you have given 4 parts in which you have given 2 numbers. So you have to find out 5 rational numbers between those numbers. Okay, so first part you have given here -1 and 0. Okay, so -1 and 0 के बीच में आपको 5 rational number list out करना है. Okay, so see -1 and 0. Since -1 and 0 are the integers, so we can write every integer in the form of p upon q, means rational number form. Okay, by taking denominator as 1. Okay, so -1 we can write as -1 upon 1. Similarly 0 to this 0 we can write 0 upon 1. Okay, now see, since there is no any difference between 0 and -1. Okay, so 0 and -1 दोनों ही इंटीजर क्या है, कॉन्टिन्यूएशन में, तो इनके बीच में डिफरेंस नहीं है, इनके बीच में कोई भी नंबर लाई नहीं कर रहा है. इसलिए इन दोनों रैशनल नंबर के हमें ऐसे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर फॉर्म करने हैं कि न्यूमरेटर के बीच में नंबर्स का डिफरेंस हो. ओके, सो लेट्स मल्टीप्लाई y हेयर, सपोज y 10. ओके, 1 into 10. So if we are multiplying in denominator, so we will have to multiply by the same number in numerator also. Okay, and here 0 upon 1. यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, 1 है, तो आगे भी हमें डिनोमिनेटर सेम ही रखना है. ओके, सो दैट्स वाई वी विल मल्टीप्लाई बाय 10. सो 10 into -1 is -10. 10 into 1 is 10. Okay, and 0 into 10 is 0 and 1 into 10 is 10. Okay, now see, these are the like rational numbers because their denominators are same. Now see, 0 between 0 and -10 there are many integers. Okay, so that means 5 rational numbers between -1 and 0 are before 0 -1 upon 10, then -2 upon 10. You can choose any 5. Okay, so if we take -3 upon 10, -4 upon 10, -5 upon 10. Okay, you can also take -6 upon 10, -7 upon 10, -8 upon 10, -9 upon 10 till -10. Okay, so these are the 5 rational numbers which lies between -1 and 0. Okay, now see the second part, -2 and -1. Here these two also are integers, so we can write integers in the form of rational number by taking denominator as 1. Okay, so -2 upon 1 and this one will be -1 upon 1. Okay, -1 और -2 आपके कॉन्टिन्यूएशन में, -1 के पहले क्या आता है, -2, तो बीच में कोई भी नंबर लाई नहीं कर रहा, इसलिए हम क्या करेंगे, इन दोनों रैशनल नंबर्स के इक्विवेलेंट रैशनल नंबर लिखेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है, 1 है. ठीक है, तो हम यहाँ पर सपोज आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. सो सपोज वी आर मल्टीप्लाइंग हेयर बाई 5, तो वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. यहाँ पर भी सेम नंबर का मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि डिनोमिनेटर हमें क्या सेम रखना है, लाइक फ्रैक्शन रखना है, तो सिर्फ न्यूमरेटर के बीच में जो भी डिफरेंस रहेगा उसमें जो नंबर्स लाई करेंगे आप इजीली उन्हें लिख सकते हैं. ओके, सो -2 into 5 is -10 upon 5 and this one
minus 5 upon 5. Okay, now see, these are the like rational numbers between minus 5 and minus 10, minus 6, minus 7, minus 8, minus 9. So there are only 4 rational number which will lie between minus 5 upon 1 and 5 upon 5 and minus 10 upon 5. But we have to list out here 5 rational number. So we will multiply this by another number so that the difference between the numerator can be large. Okay, so 10 upon 5, if we multiply by it 2, here also, so minus 10 into 2 is minus 20, 5 2s are 10, here minus 10 upon 10. Now you can see denominators are same and numerators are minus 10 and minus 20. So between minus 10 and minus 20 there are 9 integers. So the rational numbers, 5 rational numbers between these two rational number will be minus 11 upon 10, minus 12 upon 10, minus 15 upon 10, कोई भी 5 आप चूज कर सकते हैं, ठीक है, माइनस 11 अपॉन 10 से लेकर माइनस 19 अपॉन 10 तक. सो माइनस 17 अपॉन 10 एंड माइनस 18 अपॉन 10. ओके, सो दीज आर द 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन माइनस 2 एंड माइनस 1. ओके, आप यहाँ पर, मैंने यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई किया, आप 10 का कर सकते हैं, 100 कर सकते हैं, आप पर डिपेंड करता है कि आप किस नंबर से मल्टीप्लाई करके इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकाल रहे हैं. Okay. Now see the third part. So here also we have to list out 5 rational number between minus 4 upon 5 and minus 2 upon 3. Okay. So see these rational numbers. So यहाँ denominators क्या हैं, different है. तो पहले तो इन दोनों ही rational numbers को हमें like rational number बनाना है. Means इनके denominators को सेम करना है. तो देखिए आपको ऐसा मल्टीपल चूज करना है जो 5 का भी हो, 3 का भी हो. ओके, तो देखिए माइनस 4 अपॉन 5, 5 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमरेटर को भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. इधर माइनस 2 अपॉन 3 है, 5 6 या 30 होता है और 3 की टेबल में भी 30 आता है. इट मीन्स वी हैव टू मल्टीप्लाई हेयर बाई 10 टू गेट डिनोमिनेटर 30. ओके, so 6 4 are 24 and 5 6 are 30. Here minus 2 into 10 is minus 20 upon 3 10 are 30. Okay, अब डिनोमिनेटर्स क्या है आपके, सेम है. तो आपने माइनस 4 अपॉन 5 एंड माइनस 2 अपॉन 3 के ऐसे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकाले हैं जिनके डिनोमिनेटर्स क्या है, सेम है, 30 है. अब देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो हमें न्यूमरेटर को चेक करना है. यहाँ न्यूमरेटर माइनस 20 है, यहाँ पर माइनस 24 है. तो माइनस 20 और माइनस 24 के बीच में कितने, माइनस 21, माइनस 22, माइनस 23 मीन्स 3 रैशनल नंबर इन दोनों रैशनल नंबर के बीच में हो सकते हैं. लेकिन हमें लिस्ट आउट कितने करने, 5 निकालने हैं. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों न्यूमरेटर्स के बीच में थोड़ा और बड़ा डिफरेंस लेना पड़ेगा. उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है, तो अब इसका भी हमें इक्विवेलेंट निकालना है. तो देखिए माइनस 24 अपॉन 30 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर भी क्योंकि डिनोमिनेटर्स हमें सेम रखना है. सो 20 अपॉन 30 इंटू 2 हेयर ऑल्सो. सो 24 2s are 48 with minus sign and 30 2s are 60. Here minus 20 into 2 minus 40 and upon 60. Okay, now see the denominators are same and minus 40 and here is minus 80. So minus 41, minus 42, minus 43, minus 44, minus 45, minus 46, minus 47 means total 7 rational number can lie here in between these two. Okay, so the rational numbers, 5 rational numbers.
between -4/5 and -2/3 are. Any 5 you can choose between -40/60 and -48/60. Okay, so it can be -41/60, -42/60, -43/60, -44/60 and -45/60. Okay, so these are the 5 rational numbers which lies between -4/5 and -2/3. Okay, now let's move to the fourth part. See here, the rational numbers are -1/2 and 2/3. Okay, -1/2 and 2/3. Here also the denominators are different, so we have to choose the common multiple of these two denominators. See, -1/2. If we multiply -1/2 by 15, so we will get in denominator 30, and we all know that 30 is the multiple of 3, 10 times. Okay, so here we will multiply by 15. Okay, हमें उन नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिससे दोनों के डिनोमिनेटर्स क्या हो, सेम हो जाए, मतलब ये दोनों लाइक रैशनल नंबर हो जाए. ठीक है, यहाँ पर क्या है 2/3, तो 3 को आप 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. ओके, सो -1 into 15 is -15 and 15 2s are 30. Here 2 10s are 20/30. Okay, one is positive, another is negative, so many rational number can lie between these two. Okay, so what we have to list out only 5. So 5 rational numbers between -1/2 and 2/3 are -14/30, -13/30, -12/30, -11/30 and -10/30. You also can take 0 because one is positive, another is negative. So surely there will be 0 in between these two. Okay, because this lie to the right of 0 and this lie to the left of 0. Okay, so these are the 5 rational numbers between -1/2 and 2/3. Here we have multiplied by 15 and here 10. You can also multiply by any number. Suppose you are multiplying by 30. So 30 2s are 60. So here this denominator we also have to make 60. 3 into 20. So you have to multiply here by 20. So you can multiply by any number. Okay, so that the denominator can be same. Now question number 2 is write 4 more rational numbers in each of the following patterns. Okay, so in this question you have given 4 patterns. You have to complete them while writing 4 more rational numbers after them. Okay, so see here, the first pattern you have given a -3/5, the second term is -6/10, then -9/15, -12/20. next 4 you have to write here. Okay, तो देखिए सबसे पहले न्यूमरेटर में देखिए कि क्या हो रहा है. न्यूमरेटर फर्स्ट टर्म में क्या है, -3, then -6, -9, -12. So as you can see here, -3 into 2 is -6, -3 into 3 is -9, -3 into 4 is -12. It means these are the multiples of -3. Okay, so the next will be -3 into 4 is -12. That means we have to multiply now by 5. So -3 into 5 is -15. Okay, -15. नेक्स्ट क्या आएगा, न्यूमरेटर -15. अब डिनोमिनेटर को देखिए 5, 10, 15, 20. So these are also the consecutive multiples of 5. 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20. नेक्स्ट क्या आएगा, 5 5 जा 25. ओके, नाउ नेक्स्ट
So minus 3 into 5 is minus 15. Next, minus 3 into 6 is minus 18. Okay, and 5 5s are 25. Next will be the sixth multiple of 5. So 5 6 are 30. So next rational number will be minus 18 upon 30. Okay, let's take two more. So minus 3 into 6 minus 18. So now we have to multiply by 7. So minus 3 into 7 is minus 21 upon 5 5s are 25, 5 6 are 30, 5 7s are 35. So next rational number will be minus 21 upon 35. Okay, so one more you have to write here. So see, minus 3 into 8 minus 24 upon 5 7s are 35. Next will be 5 8s are means 8th multiple of 5, that is 40. Okay, यहाँ पर माइनस 3 माइनस 6 माइनस 9 ये सब क्या है, माइनस 3 की मल्टीपल्स है. ओके, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम 6 टाइम 7 टाइम देन 8 टाइम. Likewise, here are the in denominator the multiples of 5. So 5 1 ja, 5 2 ja, 5 3 ja, 5 4 ja, 5 5 ja, 5 6 ja, 5 7 ja, 5 8 ja. Okay. Now see the second. Minus 1 upon 4, minus 2 upon 8, minus 3 upon 12. So first check the numerator part. Minus 1, minus 2, minus 3. Here are the integers, consecutive integer. So next will be minus 4. After that minus 5. Then minus 6, then minus 7. Okay, see here 4 in first term denominator is 4, then 8, then 12. So these are the multiples of 4. 4 1 ja 4, 4 2 ja 8, 4 3 ja 12. Next will be 4 4 ja 60, then 4 5 ja 20, then 4 6 ja 24. Next will be 28. Okay, now see the third part. Minus 1, then 2, then 3, then 4. Here 6 minus 12 minus 18 minus 24. अब देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म आपको दे रखा है वो थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है. माइनस 1 अपॉन 6, माइनस 1 अपॉन 6 को आप क्या लिख सकते हैं, माइनस 1 अपॉन 6 को अगर माइनस 1 से मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बोथ में तो क्या आएगा, माइनस 1 इंटू माइनस 1 इज 1 एंड 6 इंटू माइनस 1 इज माइनस 6. इट मीन्स माइनस 1 अपॉन 6 इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 6. ओके, तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज करने के लिए न्यूमरेटर नेगेटिव दिया है, डिनोमिनेटर पॉजिटिव. बाकी की जो इस पैटर्न में न्यूमरेटर वो सारे पॉजिटिव है और डिनोमिनेटर्स नेगेटिव है. इसका मतलब इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन माइनस 6. ओके, दिस यू कैन राइट माइनस 1 अपॉन 6 एज 1 अपॉन माइनस 6. अब ये पैटर्न आपका कंप्लीट है. 1 2 3 4. नेक्स्ट विल बी 5, देन 6, देन 7, देन 8. ओके, लाइकवाइज माइनस 6, माइनस 12, माइनस 18, माइनस 24 मीन्स दीज आर द मल्टीपल्स ऑफ माइनस 6. ओके, सो 4 टाइम्स ऑफ माइनस 6 इज माइनस 24. देन यू हैव टू टेक नेक्स्ट 5 टाइम्स. सो 5 6 are 30 minus 30. Then 6 6 are 36 means minus 36. Next will be 7 6 are 42 means minus 42. Then 8 6 are 48 means minus 48. Okay, so next step of this pattern will be 5 upon minus 30, 6 upon minus 36, 7 upon minus 42 and 8 upon minus 48. Okay, now see this part. The first term is minus 2 upon 3, next is 2 upon minus 3, 4 upon minus 6, 6 upon minus 9. So see 2, 4, 6, these are the multiples of 2. Okay, these are the multiples of 2. So 2 1 ja 2, 2 2 ja 4, 2 3 ja 6. Next will be 8, then 10, then 12, then 40. Okay, 2 3 ja 6, 2 4 ja 8, 2 5 ja 10, 2 6 ja 12, then 2 7 ja 14. Okay, and see the denominator part. Minus 3 into 2 minus 6, minus 3 into 3 minus 9,
-3 into 4 will be -12. -3 into 5 will be -15. -3 into 6 will be -18. Then -3 into 7 will be 21. -21. Okay. So next 4 steps for this pattern will be 8 upon -12, 10 upon -15, then 12 upon -18, then 14 upon -21. Okay. So this was your question number 2. Now come to the question number 3. Now question number 3 is give 4 rational numbers equivalent to given rational numbers. Okay. So in this question you have given 3 rational numbers, of which you have to find out 4 rational numbers, means equivalent 4 rational numbers. Okay. So let's see the first part. -2 upon 7. -2 upon 7 के आपको 4 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर फाइंड आउट करने। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना होता है, किसी भी नंबर से सेम नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। ओके। सो लेट्स सी -2 upon 7. So first equivalent rational number will be -2 upon 7 into, suppose here we are multiplying by 2. So what will be the rational number? -2 into 2 is -4 and 7 into 2 is 14. So -4 upon 14 is 1 equivalent rational number of this. Okay. Let's take second. -2 upon 7 if we multiply by 3. So it will be -6 upon 21. Okay. Likewise if we multiply by 4, so it will be -8 upon 28. Okay. And next if we multiply by 5, you can multiply by any number. Okay. These can be negative as well as positive. Okay. So 5 2s are -10. 5 into -2 is -10 and 7 5s are 35. Okay. So -4 upon 14, -6 upon 21, -8 upon 28 and -10 upon 35 are the equivalent rational numbers of -2 upon 7. ये 4 आपके क्या हो गए, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर ऑफ -2 upon 7. Okay. Similarly see this part, 5 upon -3. Okay. 5 upon -3. So you can multiply this 5 upon -3 by any number. Suppose I am multiplying here by 10. So 10 5s are 50 and 10 minus 3s are means -30. Okay. Second I am multiplying by 20 because we can multiply by the same number in numerator as well as in denominator. Okay. So it depends on you what number you choose here. Okay. So 25s are 100 and 20 into -3 is -60. Similarly if we multiply 5 upon -3 by 6, so 6 5s are 30 and 6 minus 3s are, okay, so it will be -18. Next fourth, 5 upon -3 if we multiply by 2, so 5 2s are 10 and -3 into 2 is -6. So these 4 rational number are the equivalent rational number of 5 upon -3. Okay. So equivalent rational numbers of 5 upon -3 are 50 upon -30, 100 upon -60, 30 upon -80 and 10 upon -6. ओके. आप अपनी चॉइस से भी किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में. कंडीशन क्या है, ये नंबर
जिससे आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं सेम होना चाहिए. ओके. Now see the third part. Next rational number is 4/9, of which we have to find 4 equivalent rational number. Okay. So 4/9 we can multiply simply by 2. 4 2s are 8 and 9 2s are 18. Okay. Another equivalent rational number we can get by multiplying by, suppose, -2. So 4 into -2 is -8. And 9 into -2 is -18. Okay. Next, 4/9 into, suppose I am multiplying by -3, because to get the equivalent rational number of a rational number we can multiply by negative as well as positive positive integer. Okay. So 4 into -3 is -12 and 9 into -3 is -27. Okay. Similarly, one more, 4/9 into 5. So 4 5s are 20 and 9 5s are 45. अब यहाँ पर देखिए, जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ रहा है 8/18, -2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ रहा है -8/18. माइनस माइनस साइन कैंसिल हो जाएंगे, क्या होगा 8/18. इसका मतलब ये दोनों तो क्या सेमी इक्विवेलेंट रैशनल नंबर हो गए. इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर किसी और नंबर से, ये तो आपके दोनों एक ही काउंट होगा. सो 1 2 3. वन मोर यू कैन फाइंड आउट हेयर. 4/9 इफ यू मल्टीप्लाई बाय 10 सपोज. सो 10 4 जा 40 and 9 10 जा 90. ओके. सो इक्विवेलेंट rational numbers, equivalent rational number of 4/9 are 8/18, -12/-27, then 20/45, and last one is 40/90. Okay. So these 4 are the equivalent rational number of 4/9. Okay. So that's all for today's session, in which we have discussed first 3 questions of exercise 9.1. Right. If you have any query, doubt related to these questions, can ask on comment section, and in my next upcoming session we are going to discuss next further question of same exercise. Till then, keep watching my channel. Thank you.